बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आज मैं आपके लेसन के चैप्टर 1 के जो लेसन है फर्स्ट, जिसका यूनिट हमने किया है, जिसमें होल नंबर्स को हम रिवाइज कर रहे थे, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ऑलरेडी आपने ये सॉल्यूशंस क्लासरूम में किए हैं, टीचर्स ने चेक किए हुए हैं, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, क्योंकि अगला सेक्शन शुरू करने से पहले इस सेक्शन की रिवीजन होना और इसके आंसर्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेरे साथ अपने आंसर्स को मैच करना है इफ़ यू हैव डन द एक्टिविटी, और अगर नहीं की तो आज मेरे साथ मिलके इन सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लीजिए। प्लीज़ अपनी बुक का पेज खोलिए और अपनी एक्सरसाइज 1.1 का पेज रेडी कर लीजिए। आपके 1.1 के पेज के ऊपर एक्टिविटीज़ हैं असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की। इनको हम डिस्कस करेंगे, अभी यहीं पे इनको हम सॉल्व कर लेंगे। सो आई नीड योर कोऑपरेशन विद दैट। Now in this question, part A, you have to fill up these flowers with numbers in ascending order. So ascending order में number आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये आपने यहाँ पे इन flowers में numbers लिखने हैं. Now here in the 4 lines, you're going to write spellings of these numbers. So 0 के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. This one is already filled. For part B, you have to write numbers in descending orders. That means going back from 9 to 0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. शाबाश। अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए, और अगर कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप अभी कर सकते हैं। एंड देन वी आर राइटिंग द नंबर नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then 0. So once this page is complete, move on to the next page. In the next page, there are 2 questions: arranging number in ascending order and arranging number in descending order. तो हम 1 by 1 एक को रिवाइज कर लेते हैं। आपने सबसे पहले नंबर्स को देखना है 5, 3, 7, 2, 1. And remember, ascending order में the smaller number comes first. So the smaller number in this is 1, then it is 2, then 3, then 5, then 7. This is for part A. For part B here, look at the numbers again. 3, 0, 2, 9, 8, 1. So pick up the smallest number first, which is 0. Then comes 1, 2, 3, 8, and 9. Part C. 4, 1, 7, 6, 8, 0, 2. So let's arrange them. The smaller number comes first. So the smaller number here is 0, 0, 1, 2, 4, 6, 7, and 8. Question number 3. Arrange given numbers in descending order. Now the bigger number will come first. So let's observe 4, 1, 8, 0, 6. Which is the biggest number here? Yes, it is the number 8. 8, then 6, 4, 1, 0. शाबाश। अब पार्ट बी करते हैं। 3, 8, 9, 4, 7, 0. So B is, the biggest number is 9, then 8, 7, then comes 4, 3, and 0. I hope I have not missed any number. If I have skipped a number, please correct it. And then C. 7, 0,
5, 1, 8, 2, 3. So the biggest number here is number 8. Then we have 7. Then we have 5. Then we have 3. Then 2. Then 1. And then 0. So please double check your answers from my answers and let's see if we have all done it correctly. अब आपने चेक कर लिए अपने आंसर्स तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने बिफोर की बात की थी, नंबर 5 जिसमें हमने आफ्टर की और नंबर 6 जिसमें हमने बिटवीन के नंबर्स फिल अप किए थे. सो लेट्स क्विकली फिल दिस अप हियर. आई फिल इट अप हियर ऑन द पेज. The number comes before 2 is 1. Before 5 is 4. Before 8 is 7. Before 6 is 5. Before 9 is 8. Before 3 is 2. Before 7 is 6. Before 4 is 3. Once this section is complete, let's look at the next one for after. 1 is after 0. 6 is after 5. 3 is after 2, 8 is after 7, 4 is after 3, 7 is after 6, 5 is after 4, and 9 is after 8. So these were before. जो पहले आते हैं ये है. After तो अब कौन सा ऑप्शन आया? बिटवीन का, यानी दरमियान में कौन से नंबर्स आ रहे हैं आप मेरे साथ वो फिलअप करेंगे. सो 2 इज बिटवीन 3, 5 इज बिटवीन 6, 1 इज बिटवीन 0 and 2, 5 and then the missing number is 6. So 6 is between 5 and 7, 4 is between 3 and 5, 8 is between 7 and 9, 7 is between 6 and 8, and 3 is between 2 and 4. So dear teachers, इस तरह जब बच्चों के साथ आप तमाम क्वेश्चंस को एक दफ़ा फिर रिव्यू करके उनके साथ कोलैबोरेशन में तमाम आंसर्स को मैच कर लेंगे तो आज के दिन के बाद जब हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में भी कंटिन्यू होंगे, स्पेशली बिफोर, बिटवीन, आफ्टर और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के. तो ये टर्म्स बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इसी एक्टिविटी से मिलते जुलता एक क्लास प्रोजेक्ट है जो टेक्स्ट बुक में आपके लिए अवेलेबल है. इस क्लास प्रोजेक्ट का मकसद है कि आप बच्चों को सोचने की और सलाहियतें जो है उनकी उजागर करें और उनको कोशिश करें कि वो सोचें और इस क्लासरूम में डिस्प्ले लगाएं अपना उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो किताब में रिकमेंडेड है. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन के अगले पार्ट की तरफ जिसमें कि मैंने आपके लिए तमाम आंसर्स को डिस्प्ले पे अवेलेबल किया है. यही डॉक्यूमेंट आपके लिए जो है वो रिसोर्स में लिंक में भी अवेलेबल है. आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने आंसर्स को फॉलो करके मैच कर सकते हैं. So teachers, please review the whole exercise once again if you want to before moving to the next lesson. Take care and Allah Hafiz.